Hello everyone, welcome back to Little Explorers. Now we are going to read 10 lines on International Day of the Girl Child or short essay on International Day of the Girl Child with some important data. Every year on 10th of October, countries around the world celebrate International Day of the Girl Child. It is also called the Day of Girls and the International Day of the Girl. The 2020 theme of International Day of the Girl is My Voice, Our Equal Future. International Day of the Girl celebrates the importance, power, and potential of girls around the world. The main objective of this day is to ensure that every girl child in the world gets all her human rights. The day was started with a view to reducing discrimination against girls and boys in society. To promote the status of girls in society, various programs are organized all over the world to celebrate Girl Child Day. The celebration ensures equal opportunities for the girls in the field of education, health, legal rights, honor, protection, etc. The program celebration aims to highlight the inequality faced by girl children in the world. The National Girl Child Day is also celebrated every year on 24th January in order to provide opportunities and support to the girls in India. The day is also celebrated every year to strengthen the position of girls in society so that they can make their living better. Now, according to data, more than 62 million girls around the world had no access to education as of census 2014. Worldwide and collectively, girls aged 5 to 14 spend more than 160 million hours more on household chores than boys of the same age do. टू 2014 सेंसस के अकॉर्डिंग विश्व भर में 62 मिलियन गर्ल्स अभी भी एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाती हैं. सेकेंड, सेम एज बॉयज़ और गर्ल्स 5 से लेकर 14 के एज ग्रुप में जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ के कंपेयर में 160 मिलियन आवर्स ज़्यादा घर के कामों में अपना समय बिताती हैं. ग्लोबली 1 in 4 गर्ल्स आर मैरिड बिफोर एज 18. विश्व भर में प्रत्येक 4 में से एक जो गर्ल है उनकी मैरिज 18 साल की एज से पहले कर दी जाती है. On October 11, 2016, Emma Watson, a United Nations Women's Goodwill Ambassador, urged countries and families worldwide to end forced child marriage. Many girls around the world are vulnerable to acts of sexual violence and against. बहुत सारी गर्ल्स विश्व भर में सेक्सुअल वायलेंस की शिकार होती है और ऐसे जो हीनियस क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स होते हैं उनको अनपनिश्ड कर दिया जाता है. ये एक अनुमानित डेटा है. उसके अकॉर्डिंग हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड क्यों सेलिब्रेट करते हैं. तो इक्वली
राइट्स मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। टू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।